अस्सलामुअलैकुम। तो आज जिस किताब का हम जिक्र करेंगे, जिस पे हम बातचीत करेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द फेमस 40 रूल्स ऑफ लव बाय इलिफ शफक। इलिफ शफक इज़ अ तुर्किश राइटर। और ये किताब है एक एवरेज, मतलब इसका साइज़ जो है एक एवरेज साइज़ है। इट्स अ 350 पेजेस बुक। तो अगर आप दिन को 50 पेजेस भी पढ़ें तो यू कैन एंडली ईजीली फिनिश दिस बुक इन अ वीक। अच्छा, अब किताब पे आते हैं। तो किताब इट्स बिकम वन ऑफ माई फेवरेट बुक इन इंग्लिश फिक्शन की अगर बात की जाए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ नावल। ये कोई सिंपल एक नावल नहीं है। इट्स अ स्टोरी ऑफ हाउ अ स्कॉलर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ग्रेटेस्ट पोएट दैट द वर्ल्ड टुडे नो एज रूमी। तो ये एक स्टोरी है। इसके अंदर आपके पास रूमी और शम्स ऑफ तब्रेज़, इनका आपस में कैसे इनका ये मिले कैसे, और क्या इन्होंने किन चीज़ों के थ्रू गए, और जिसकी वजह से ये रूमी जो है वो एक स्कॉलर से एक पोएट की तरफ गए, और जो है क्या चीज़ है, क्या वजूहत आई। तो इसमें बेसिकली वो सूफीज़म का टच है, सूफीज़म की बुक है। और ये नावल और इसका वो फिक्शन का टच देने के लिए इट्स नावल इनसाइड नावल, मतलब इसमें दो स्टोरीज आपके पास चल रही होती हैं, पैरेलल चल रही होती है। एक स्टोरी रिसेंट टाइम्स की और एक बैक टू द टाइम ऑफ शम्स ऑफ तब्रेज़, किस तरह रूमी के पास गए। अच्छा, ये मैंने आपको इस बुक का थोड़ा सा, मतलब आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इन दिस बुक। तो आई एन्जॉयड अ लॉट दिस बुक। मुझे ज़्यादा टाइम लगा पढ़ने में, क्योंकि आई वॉज बिजी इन माई एग्जाम्स एंड अदर स्टफ। तो इसी वजह से अब बुक की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको थोड़ा कुछ इसमें 40 रूल्स बताए गए हैं, 40 रूल्स ऑफ लव बेसिकली, उसको फर्दर डिस्कस किया गया है। तो उसमें कुछ चीज़ें हम इसमें आपके सामने डिस्कस करूँगा। आई विल नॉट ट्राई टू मेक दिस एन एक्सटेंसिव वीडियो, लेकिन लेट्स स्टार्ट ऑफ बाय डिस्कसिंग सम ऑफ द थिंग्स अबाउट लव। मतलब कहते हैं कि पेज नंबर 15, फॉर डिस्पाइट वट सम पीपल से, लव इज नॉट ओनली अ स्वीट फीलिंग बाउंड टू कम एंड क्विकली गो अवे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इट्स रीडिंग बिहाइंड द लाइन्स। इसके बाद एक और बड़ी अच्छी बात की गई है कि इन मैनी वेज द 21st century is not that different from the 13th century. Both will be recorded in history as times of unprecedented religious clashes, cultural misunderstandings, and a general sense of insecurity and fear of the other. At times like these, the need for love is greater than ever. ठीक हो गया? आगे लिखते हैं कि बिकॉज लव इज द वेरी एसेंस एंड पर्पस ऑफ लाइफ, एज रूमी रिमाइंड्स अस, इट हिट्स एवरीबॉडी इंक्लूडिंग दोज हु शन लव, इवन दोज हु यूज द वर्ड रोमांटिक एज अ साइन ऑफ डिसअप्रूवल। मतलब रूमी कहते हैं कि लव जो है वो हर किसी को होता है। अच्छा, बेसिकली ये जो स्टोरी है ना, ये इस बारे में है कि वो क्या ऐसे वाक़यात हुए, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसने एक रूमी, जो कि एक मेन स्ट्रीम क्लैरिक थे, उसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ मिस्टिक, इनटू अ पैशनेट पोएट एंड एन एडवोकेट ऑफ लव। इट्स बेसिकली अ स्टोरी ऑफ दैट। उन्होंने फिर वो जो उनका वो द विरलिंग डांसेस ऑफ दरवेशिस का जो एक स्पेसिफिक डांस होता है, वो रूमी की ईजाद है, शम्स ऑफ तब्रेज़ी की ईजाद है। वो कैसे आया, वो इसमें बताया गया, इसमें फर्दर डिस्कस किया गया। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें कुछ मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें अगर ढूंढूँ। नेक्स्ट बात सुनिए कि द पाथ टू द ट्रुथ इज अ लेबर ऑफ द हार्ट, नॉट ऑफ द हेड। मेक योर हार्ट योर प्राइमरी गाइड, नॉट योर माइंड। मीट, challenge, and ultimately prevail over your nufs with your heart. Knowing yourself will lead you to the knowledge of God. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे लिखते हैं कि it wasn't death that worried me, for I didn't see it as an end, but dying without leaving a legacy behind. There were many words piled up inside my chest, stories waiting to be told. I wanted to hand all this knowledge to one another person, neither a master nor a discipler. I sought an equal, a companion. ये बेसिकली शम्स ऑफ तब्रेज़ कह रहे हैं कि मुझे एक कंपेनियन की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, ना किसी मास्टर की, ना किसी स्टूडेंट या डिसिपल की, बट आई नीड अ कंपेनियन। ही फाउंड दैट कंपेनियन इन द फॉर्म ऑफ रूमी। फर्दर चलते हैं।
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि each and every reader comprehends the Holy Quran on a different level in tandem with the depth of his understandings. There are four levels of insight. The first level is the outer meaning, and it is the one that majority of the people are content with. Next is the batin, the inner level. Third, there is inner of the inner, and the fourth level is so deep it cannot be put into words and therefore bound to remain indescribable. मतलब वो कहते हैं कुरान मजीद को अंडरस्टैंड करने के चार लेवल्स हैं. पहला लेवल है कि वो बस ज़ाहिरी पढ़ना, जो कि हर बाहर से पढ़ना. दूसरा लेवल है कि वो अंदर से पढ़ना. तीसरा अंदर के अंदर. और चौथा है कि वो ऐसा लेवल है जिसको आप अल्फाज में पुट नहीं कर सकते और इट्स अन इनडिस्क्राइबल. आगे कहते हैं, शम्स कहते हैं कि स्कॉलर्स हु फोकस ऑन द शरिया नोज द आउटर मीनिंग, सूफीज नोज द इनर मीनिंग, सेंट know the inner of the inner, and as for the fourth level that is known only by prophet and those closer to gods. कहते हैं कि जो पहला लेवल है वो जो स्कॉलर्स जो शरिया को फॉलो करते हैं वो पहले लेवल पे होते हैं, वो पहले लेवल की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है. दूसरे लेवल पे आपके पास होते हैं जो सूफीज होते हैं, वो इनर लेवल पे होते हैं, सेकंड लेवल. थर्ड पे इनर से इनर दैट आर सेंट्स, और फोर्थ पे कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स को पता है और कुछ खास लोगों को जो गॉड के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक है. ठीक है, फर्दर चलते हैं. एक और लाइन, एक और बहुत ही आपने सुनी होगी, मे लव फाइंड यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट, वेयर यू लीस्ट एक्सपेक्ट. सो इस बुक ने मैं आई एन्जॉयड रीडिंग इट. अब एक फर्दर एक इन्होंने एक कंपैरिजन दिया, इंटेलेक्ट और लव. इट्स बेसिकली द बुक ऑल्सो कवर्स ऑन द थीम ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट. सो उसका एक उसी रब्त में एक बात लिखी गई है कि इंटेलेक्ट एंड लव आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. ही सेड इंटेलेक्ट ties people in knots and risk nothing, but love dissolves all tangles and risks everything. Intellect is always cautious and advises beware too much ecstasy, where love says, oh, never mind, take the plunge. Intellect does not easily break down, whereas love can effortlessly reduce itself to a rubble, but treasures are hidden among ruins. A broken heart hides treasure. सोच रहे हैं मेरी बात कि जो इंटेलेक्ट होता है वो आपको कहते हैं यार रिस्क ना लो इतना, ठीक है, इट्स रिस्की, और ये बहुत ज़्यादा आपको पागलपन की तरफ लेके जाएगा. लेकिन लव कहता है नहीं, लेट्स टेक द जंप. और इंटेलेक्ट टूटता नहीं है, लव जो है ना वो इंसान को रेत बना देता है, डस्ट बना देता है. लेकिन वो अगेन कहते हैं कि उसी डस्ट में ही देयर आर ट्रेजर्स. और जो एक टूटा हुआ दिल होता है ना उसके अंदर खजाने छुपे होते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और लॉनलीनेस और सॉलिट्यूड की बात की गई है. उस पर इनका एक बड़ा मज़े का पॉइंट है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि लॉनलीनेस एंड सॉलिट्यूड आर टू डिफरेंट थिंग्स. When you are lonely, it is easy to delude yourself into believing that you are on the right path. Solitude is better for us, as it means being alone without feeling alone. But eventually, it is best to find a person, the person who will be your mirror. Remember, only in another person's heart can you truly see yourself and the presence of God within you. अगेन वो लव की एग्जाम्पल अगर आप इधर कनेक्ट कर पाएँ, आप सॉलिट्यूड और लॉनलीनेस की डिस्कशन है उसको कंप्लीट कनेक्ट कर पाएँ. देखिए ये रीडिंग होती है ना, रीडिंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. आप जब रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में तो आप डॉट्स कनेक्ट नहीं करते, लेकिन जो आप इस मराहिल से गुजरते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपकी रीडिंग्स बढ़ती जाती है, तो आप जब कुछ को पढ़ रहे होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं. यहाँ पे अच्छा आपको याद आता है यार ये किताब ने ये पॉइंट कहा था, फलानी किताब में ये पॉइंट था. सो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. तो यू स्टार्ट कनेक्शन, यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स. अच्छा, एक और रूल है कि 40 रूल्स ऑफ लव किताब का नाम है, तो इसमें एक और रूल है कि वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, नो मैटर हाउ ट्रबलिंग थिंग्स माइट सीम, डू नॉट इंटर द नेबरहुड ऑफ डिस्पेयर.
Even when all doors remains closed, God will open up a new path only for you. Be thankful. It is easy to be thankful when all is well. A Sufi is thankful not only for what he has been given, but also for all that he has been defined. Again, सब्र शुक्र का जो वो बात है, वो इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत अंदाज में, एक रूल में उन्होंने बात को बयान कर दिया. वही बात है कि एक दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है. अच्छा, पेशेंस पे इन्होंने क्या, पेशेंस की बात करते हैं. पेशेंस की बहुत बात होती है कि पेशेंट डज नॉट मीन टू पैसिवली इंड्योर, इट मीन्स टू बी फार साइटेड इनफ trust the end result of a process. What does patience mean? It means to look at the thorn and see the rose, to look at the night and see the dawn. Impatient means to be so short sighted as not be able to see the outcome. The lovers of God never run of patience, for they know that time is needed for the crescent moon to become full. सबर पे क्या खूबसूरत बात कही है कि आप अगर कांटा देखते हैं तो आपको गुलाब नज़र आना चाहिए, अगर आप रात देखते हैं तो आपको दिन नज़र आना चाहिए. मेरे जहन में एक शेर आता है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. अहमद फराज साहब का शेर का एक मिसरा है कि लंबी है गम मगर शाम ही तो है. लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. सॉरी. अच्छा, फर्दर इसमें हम आगे जाते हैं तो मैं हमेशा मतलब एक चीज़ ने मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि हम बचपन से कहते हैं कि यार मंजिल की तरफ जाओ, स्ट्राइव फॉर द मंजिल. लेकिन अगर वो मंजिल आपको जल्दी मिल जाए देन व्हाट, आप फिर किस चीज़ के पीछे जाएंगे. तो वो कहते हैं कि अगर आप जो, इट्स ऑलवेज द जर्नी दैट मैटर्स, क्योंकि वो जर्नी आपको ट्रांसफॉर्म करती है एक ऐसे इंसान में. तो शम्स ने बात कहते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ मेक्स लिटिल डिफरेंस. नो मैटर वट योर डेस्टिनेशन, just be sure to make every journey a journey within. If you travel within, you will travel the whole wide world and beyond. अब आगे कहते हैं कि you have to accept the thorn with the rose. मतलब आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि गुलाब के साथ कांटा तो होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको खाली गुलाब मिल जाए. और कहते हैं कि the midwife knows that when there is no pain, the way for the baby cannot be opened and the mother cannot give birth. Likewise, for a new self to be born, hardship is necessary. मतलब आपको हार्डशिप से गुजरना होगा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. तो ये बात है कि आगे कहते हैं कि the quest for love changes us. There is no seeker among those who search for love who has not matured on the way. कि जो लव को सर्च करता है वो मेच्योर हो जाता है. The moment you start looking for love, you start to change within and without. बड़ी खूबसूरत बात की गई है. अच्छा, यहाँ पे अगर एक बात की गई है कि जब इंसान जो है ना वो बहुत डेस्परेट होता है कि औरों का अप्रूवल ले, मतलब तो ये हो ही नहीं सकता कि वो औरों की क्रिटिसिज्म से अपने आप को बचा सके. मतलब उसकी क्रिटिसिज्म को भी वो अपने सर पे चढ़ा देता है. ठीक हो गया. क्यों? अब जितना कह कि यार इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इट मैटर्स, इट इज़ देयर, वो पर चढ़ाता है. उसकी वजह ये है कि ही इज़ एट द फर्स्ट प्लेस ही इज स्ट्राइविंग फॉर द अप्रूवल ऑफ अदर्स. अच्छा, देयर आर मोर फेक गुरुज एंड फॉल्स टीचर्स इन दिस वर्ल्ड देन द नंबर ऑफ स्टार्स इन द विजिबल यूनिवर्स. Don't confuse power-driven, self-centered people with true mentors. A genuine spiritual master will not direct your attention to himself or herself and will not expect absolute obedience or utter admiration from you, but instead will help you to appreciate and admire your inner self. True mentors are transparent as glass. They let the light of God pass through them. खूबसूरत बात अगर आप इसको समझ सकें. इसमें अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं कि एक अगले रूल की तरफ जाते हैं कि गॉड इज बिजी विद द कंप्लीशन ऑफ योर वर्क both outwardly and inwardly. He is fully occupied with you. Every human being is a weak work in progress that is slowly but is inexorably moving towards perfection. We are each an unfinished work of art, both waiting and striving to be completed. God deals with each of us separately because humanity is a fine art of skilled penmanship where every single dot is equally important for the entire picture. It's one of the other rules.
अच्छा, फर्दर बढ़ते हैं इस किताब में, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप रीड करेंगे, डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट एंड यू विल enjoy it too. मतलब इट्स ऑल्सो एन enjoyable बुक, लिटरेचर है दैट. अच्छा, अगले रूल पे बात करते हैं कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वे अदर्स ट्रीट यू, यू शुड फर्स्ट चेंज द वे यू ट्रीट योर सेल्फ. Unless you learn to love yourself fully and sincerely, there is no way you can be loved. Once you achieve the stage, however, be thankful for every thorn that others might throw at you. It is a sign that you will soon be showered in petals. अच्छा, अगले वो अगला एक डिस्कशन होती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. वो कहते हैं कि लिविंग वन डे एट अ टाइम, वी आर सो मच thinking about either the past or the future. What we miss is the present moment. What can we make of this present moment? अच्छा, वो कहते हैं कि the past is a whirlpool. If you let it dominate your present moment, it will suck you in. Time is just an illusion. What you need to live is this very moment. That is all that matters. First, अच्छा, अगला कहते हैं कि fret not where the road will take you. Instead, concentrate on the first step. That's the hardest part, and that's what you are responsible for. Once you take that step, let everything do what it naturally does, and the rest will follow. Do not go with the flow. Be the flow. अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि फिलोसफर और सूफी की, एक दरवेश की एक डिस्कशन है कि अ फिलोसफर met a dervish one day and they instantly hit it off. The two talked for days on end, completing each other's sentences. Finally, when they parted company, the philosopher reported of the conversation, "All that I know," he says. Next, the Sufi gave his account, "All that I see," he knows. But the society has always problem with Sufis and philosophers. अच्छा, यहाँ पे लाइफ और जिंदगी की बात की गई है कि लाइफ इज अ टेम्पररी लोन and this world is nothing but a sketchy imagination of reality. Only children would mistake a toy for the real thing, and yet human beings either become infatuated with the toy or disrespectfully break it and throw it aside. वो कहते हैं कि यार एक खिलौना होता है तो जिंदगी खिलौने की तरह है. तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तो या तो बहुत ज़्यादा इस खिलौने से लगाव लगा लेते हैं या फिर इस खिलौने को छोड़ देते हैं. तो आपने क्या करना है कि आपने एक्सट्रीम से दूर रहना है इन लाइफ. In this life, stay away from all kind of extremities, for they will destroy your inner balance. Sufis do not go to extremes. A Sufi remains mild and moderate. ये उन्होंने बात की. Again, you are going to get a lot of Sufi discussion in this book. अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी डिस्कशन रखने वाला हूँ, आप इसे गौर से सुनिएगा. When Shams of Tabriz asked me that the question about the Prophet Muhammad and the Sufi Bistimami, I felt as though we were the only two people left on the face of earth, in front of us extending the 7 stages to the path of truth. There are 7 stages to the path of truth, 7 maqamat. Every soul had to go through in order to attain oneness. बेसिकली उन्होंने कहा कि जो सच्चाई का जो पाथ टू ट्रुथ है ना, उसमें 7 स्टेजेस आती हैं. पहली स्टेज क्या है? द फर्स्ट स्टेज इज द डिप्रेव्ड नफ्स, the most primitive and common state of being. It's the most common state of being. When the soul is entrapped in worldly pursuit, जिंदगी के pursuits में वो trapped होता है. Most human beings are stuck there, struggling and suffering in the service of their basest self, but always holding others responsible for their continuing unhappiness. औरों को responsible करना कि यार ये मेरी uncontinued happiness है. This is the first stage. What comes after that? If and when a person becomes aware of the soul's abased situation by starting to work on himself, he can move to the next stage, which in a way is the opposite of the previous one. Instead of blaming other people all the time, the person who has reached this stage blames himself, sometimes to the point to self-effacement. Herein, the self becomes the accusing nufs,
and thus starts the journey towards inner purification. मतलब पहले वो लोगों को blame करता था, फिर उसके बाद अपने आप को blame करने लगा. That is the second stage, that is called the accusing nafs. Afterwards, that in the third stage, the person is more mature and the self has evolved into the inspired nafs. It is only at this level and not any time before that one can experience the true meaning of the word surrender and roam the valley of knowledge. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यू ऑफ नॉलेज में रोम करने के लिए आपको सरेंडर होना पड़ता है, आपको ये मानना पड़ता है कि आई नो नथिंग. जब आप कहते हैं कि नहीं मुझे सब कुछ पता है, देन यू कैन नॉट अटेन, यू कैन जस्ट वॉन्डर अराउंड दैट वैल्यू ऑफ नॉलेज. नहीं, यू हैव टू सरेंडर दैट यू नो नथिंग. और वो सुकरात का के एक कोट, एक बात मुझे आ रही है सुकरात की, कि the wisest person is the one who thinks that he is not wise. Anyone who has made in this far will possess and display patience, perseverance, wisdom, and humility. The world will feel new and full of inspirations. Nevertheless, many of the people who reach the third level feel an urge to dwell here, losing the will or the courage to go further. That is why, as beautiful and blessed as it is, the third stage is a trap for the one who aims higher. फिर वो कहते हैं थर्ड स्टेज बड़ा इंसान को बड़ा अच्छा लगता है कि वो एक नॉलेज होता है, उसके पास विजडम आता है, उसमें ह्यूमिलिएशन आता है, ही एंजॉयज दैट फेज. लेकिन वो इंसान जो और आगे बढ़ना चाहता है, तो ये जो थर्ड स्टेज है ये एक ट्रैप है, यहाँ पे रुक जाते हैं ज़्यादातर लोग. अच्छा, those who manage to go further reach the valley of wisdom and comes to known as the serene nafs. Here one's sense of self is not what it used to be, having altered into a high level of consciousness, generosity, gratitude, and unwavering sense of contentment, regardless of the hardship in life, are the main characteristics accompanying anyone who has arrived here. Beyond that lies the valley of unity. Those who are here will be pleased with whatever situation God places them in. Mundane matters makes no difference to them, as they have achieved the pleased nafs. ठीक है, समझ रहे हैं बात. थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ में जाते हैं. In the next stage, the pleasing nafs once become a lantern to humanity, radiating energy to everyone who asks for it, teaching and illuminating like a true master. Sometimes such a person can also have a healing powers. Wherever he goes, he will make a big difference in other people's lives. In everything he does and aspires to do, his main goal is to serve God through serving others. इसके बाद finally in the seventh stage, one attains the purified nafs and become insane kamil, a perfect human being. But nobody knows much about that state, and even if a few ever did, they wouldn't speak of it. The stages along the path are easy to summarize, difficult to experience, adding to the obstacles that appear along the way and the fact that there is no guarantee of continuous progress. The route from the first to the last stage is by no means linear. There is always the danger of tumbling back into the earlier stages, sometimes even from a superior stage all the way down to the first one. Given the many traps along the way, it is no wonder that in every century only a few people manage to reach the final stages. So this is, the video is getting extending. It has reached 23 minutes. I will just try to conclude the discussion. There's a lot to discuss in this book. वो जो कहते हैं कि वो बात जो है ब्यूटिलाइजिंग द बेहोल्डर, इट्स also from this book. Every true love and friendship is a story of unexpected transformation. If we are the same person before and after we loved, that means we haven't loved enough. मतलब वो सवाल है कि love changes you. It changes you as a person. It changes your perspective, your thinking, your way of observing things about different things. So that's all. I will not delve into it further because the video is going to be extending a lot, and I know वैसे भी इतनी लंबी वीडियो नहीं देखता कोई, लेकिन but if you have listened it up to this time, then you should know, then I think you are very much interested in reading this book, so you should read it. So that's all. If you have read this book, you can share your comments with me in the comment section. Moreover, I will also give my Instagram account. You can always connect with me there. That's all for now. We'll meet another day with another book. That's all. Allah Hafiz. May God bless you, and meet you in another video.